suppose I have come to this standing committee meeting of external affairs. Did the chairman choose me or the ruling party choose me? My party has nominated me. Yeah, exactly. In the same way, you let me know. You want 2 members from Trinamool Congress, you want 5 members from I'll send 5. ওরা যদি প্রপারলি যোগাযোগ করে তাহলে তোমরা পাঠাবে তাই তো ডেলিগেশন सरकार ने जो नाम तय किया अपना I have said this time and again, and I'm reiterating that when it comes to fighting or combating cross-border terrorism, forget about cross-border terrorism, any kind of terrorism. Number 2, protecting or safeguarding the sovereignty and safeguarding the national interest. Our party, All India Trinamool Congress, will stand shoulder to shoulder with the union government when it comes to these 3. And I'm reiterating it again today. As for the parliamentary delegation of members are concerned, I have said this in the afternoon, that the centre cannot decide unilaterally who will go from which party. They have to ask for names, they have to call and arrange for wider deliberations with all political parties, especially with the political parties belonging to the opposition camp. And then if you ask for the names, if you ask 5 names from Trinamool will nominate 5 members of parliaments to be a part of those delegations. Now I got a news in the afternoon that the parliamentary minister has said that they are representing the country. I couldn't agree with him more. They are actually representing the country. So when it comes to representing the country, I think we should jointly agree and unanimously decide and agree and come to a consensus. Instead of sending parliamentarians, we should be sending the family members of the martyrs or the victims' family or the survivors. We should be sending the brave armed forces, the officers who have led Operation Sindoor from the front lines, who have dedicated their life for the country, who have spent countless nights of vigilance to let India sleep without fear. Who better can represent them when it comes to representing the country? Send them. How many of such members are part of the delegation? Can the union minister answer? Can you show me one instance? So this is not a time to play politics. Politics can take a back seat. जब पार्टी का बात करो, पॉलिटिक्स का बात करो, पार्टी का बात करो, तब अलग बात होता है. जब देश का बात होता है तब ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलता है. बहुत पत्रकारों का कल मेरे पास मैसेज आया, फोन में बात हुआ कि तृणमूल अपना मेंबर नहीं भेज रहा है. तृणमूल अपना मेंबर बिल्कुल भेजेगा, पूछेगा तभी तो भेजेगा. आप यहाँ पे आए भाई, अपने चल के नहीं आया ना, मैं नहीं बुलाया, आपके ऑफिस वाले भेजे ना कि भाई आपको यहाँ जाना है. मान लीजिए तृणमूल के पास 5 ऐसा लोग हैं जिसको लगता है कि भाई देश के हित में अच्छा बोल सकते हैं, उसी को भेजेगा ना. आप तो तय नहीं कर सकते. No one was approached. No one was approached. I'm the general secretary of the party. Did they approach me? Did they approach the chairperson? No one was approached. आप पहले बात करिए, अगर अप्रोच किया दोबारा अप्रोच करें. दिक्कत क्या है? क्या प्रूफ क्या है अप्रोच किया? आप 5 मेंबर मांग लीजिए, हम 5 मेंबर दे, हम तो खड़ा होके बोल रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं. सरकार कांग्रेस also made a similar protest. Are you saying their protest is also justified? क्या वजह लगती है सरकार? मैं उसमें जाऊंगा नहीं. वजह क्या है, लक्ष्य क्या है, मनसा क्या है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं. आपको अगर पार्लियामेंट्रियंस को भेजना है, और मुझे लगता है भेजना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जो सेना के लोग लड़े, जो ऑपरेशन सिंदूर को सामने से लीड किया, आप उनको भी भेजो ना. वो ज्यादा बता पाएंगे. पाकिस्तान ने किस तरीके से टेरर को मदद किया है पिछले 5-6 दशकों में, वो पूरा दुनिया को जानना चाहिए. मैं बिल्कुल सहमत हूं. एंड द वर्ल्ड नीड्स टू कम टुगेदर एंड फाइट दिस कलेक्टिवली. लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये पार्टी का लीडर तय करेगा, बीजेपी तय नहीं करेगा. Has government approached you again after you protested? Not yet. Sir, Congress made a similar protest day before. Congress made a